Hello, you're watching the Prime Time on Hornbill TV. These are the news headlines. The Waqf Amendment Bill 2025, which was cleared by Parliament on Thursday, received President Draupadi Murmu's assent on Saturday. After President's nod, the Amendment Bill now has officially become a law. A fresh plea has been filed in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the Waqf Amendment Act 2025, claiming it was a blatant intrusion into the rights of a religious denomination to manage its own affairs in a matter of religion. With the initiatives of the Ministry of Home Affairs, the first ever meeting between Meitei CSOs and Cookie-Zone representatives in New Delhi ended positively on Saturday, in which the meeting collectively discussed 6 major crucial points to pave the way towards a lasting solution. Texas Democratic Representative Al Green said Wednesday he plans to bring articles of impeachment against President Trump after he suggested the US should take over Gaza. Now the news in detail. The Waqf Amendment Bill 2025, which was cleared by Parliament on Thursday, received President Draupadi Murmu's assent on Saturday. After President's nod, the Amendment Bill has now officially become a law. The Waqf Amendment Bill was passed in Lok Sabha on Wednesday, way beyond midnight after almost 13 hours of marathon discussions. The bill was then introduced in Rajya Sabha on Thursday and was cleared post-midnight around 2 a.m. after several hours of heated debate. In Lok Sabha, the Waqf Amendment Bill was passed by 288 to 232 votes, while in Rajya Sabha it was cleared by 128 to 95 votes. The bill was first introduced in Lok Sabha in August last year, but then referred to the Joint Parliamentary Committee. The JPC held various brainstorming sessions and heard suggestions from all the stakeholders for several months in various sittings. The draft bill was then approved by the JPC by 15 to 11 vote, accommodating 14 amendments suggested by the NDA, while it rejected 44 amendments recommended by the opposition. The bill was then tabled in Lok Sabha on April 2. After 2 days of heated discussions and debates in lower and upper house, it was finally cleared by the Parliament. The Waqf Amendment Bill 2025 aims to amend the Waqf Act 1995 to streamline the board's work and ensure efficient management of Waqf properties. Other objectives of the bill is to enhance the efficiency of Waqf boards, stop its misuse, especially for grabbing lands illegally. The amended law renames Waqf Act 1995, updates the definitions of Waqf, improves the registration process, and increases the role of technology in managing Waqf records. According to the Gazette of India, the amended bill, after getting President's nod, the Waqf Act 1995 may be called the Waqf Amendment Act 2025. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official Gazette. फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। A fresh plea has been filed in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the Waqf Amendment Act 2025, claiming it was a blatant intrusion into the rights of a religious denomination to manage its own affairs in the matter of religion. President Draupadi Murmu on Saturday gave her assent to the Waqf Amendment Bill 2025, which was earlier passed by Parliament after heated debates in both houses.
Several petitions have been filed in the top court challenging the validity of the bill. The fresh petition has been filed by Samastha Kerala Jamiatul Ulema, a religious organization of Sunni Muslims, scholars and clerics in Kerala. The plea filed through Advocate Zulfikar Ali PS said these amendments would distort the religious character of Waqf while also irreversibly damaging the democratic process in the administration of Waqf and Waqf boards. Punjab's farmer leader Jagjit Singh Dhaliwal on Sunday ended his indefinite fast, which he had started on November 26 last year, to press for various demands of agitating farmers, including a legal guarantee on the minimum support price for crops. The announcement came a day after Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan and Union Minister of State for Railways Ravneet Singh Bittu appealed to him to end his fast unto death. Dhaliwal announced that he was ending his indefinite fast at a Kisan Mahapanchayat organized at Sirhind Fatehgarh Sahib district of Punjab. Dhaliwal is a senior leader of a joint forum of the Samyukt Kisan Morcha, non-political, and the Kisan Mazdoor Morcha KMM. He began his indefinite hunger strike on November 26 last year to press the centre to accept the farmers' demands. After the centre invited the farmer leaders for talks in January, Dhaliwal started taking medical aid at the Kannori protest site but did not end his fast. On Saturday, Union Minister Shivraj Singh Chauhan had appealed to Dhaliwal to end his hunger strike. ये गल कही है कि मरण मत छड़ दो। देखो प्यारे, तुसी सारे संगत मेरे लिए रब का रूप है। मेरे अंदर मेरा रोम रोम तुहाडे लिए इस गल लिए देनी है कि तुसी मोर्चे में इस तरीके दे नाल सामभिया जिवें मैं क्या उवें सामभिया और तुहाडे हर एक दी भावना की मैं कदर करदा। पर एक गल मैनूं दस्सिओ कि मोर्चा तो जारी है, मोर्चा नहीं रुकिया। इस मोर्चे नूं जारी रखण लई मैं अंदरों अज भी मेरा मन नहीं कि मैं अनशन छड्डा, पर जिहड़ी तुसीं मेरे ते बार-बार हुक्म कीते हैं उस हुक्म दी मैं कदर करदा हां। पर एक गल जरूर तुहाडे तो मैं पुछनी चाहुंदा ते विश्वास लेना चाहुंदा हां, प्यारे सज्जनों, मोर्चा इदों भी तकड़ा लाउणा पैना है, इदों भी तकड़ा लाउणा पैना है। लड़ाई जारी है, MSP लैनी है, मोर्चे इदों वड्डे लाउणे पैने हैं। अगर लाउणा पैंदा मोर्चा, इदों भी वड्डा मोर्चा लाउणा पैंदा है। की मोर्चा लाउण लई तुसीं सहमत हो? जिस तरीके दे नाल, क्योंकि सरकार चकन्नी हुई है, सरकार ने देख लिया कि किसान लड़न जानते हैं, तो हाडी जिस तरीके नाल तुसीं मोर्चा सामभिया सरकार ने देख लिया। जिन्नी ताकत नाल आपां पहला मोर्चा सामभिया, हुण सरकार है कोई 10 गुणा ताकत नाल आउगी कि आपां भी सारे जिन्नी ताकत नाल अगे मोर्चा सामभ के रखिया है
कि इन्नी ताकत नाल मोर्चा सामोगे संभांगे जी बधेरे ताकत नाल संभांगे ये जो 10 गुना ताकत नाल मोर्चा सामना पड़ेगा ताकत मैनू तुसी इन तो मतलब पीछे हटा लो। फिर एक बार सारे जाने हाथ खड़े करके दसो पहला कि 10 गुना ताकत नाल मोर्चा लाने लिए तैयार है। The Rashtriya Janata Dal is set to challenge the Waqf Amendment Bill in the Supreme Court, with Rajya Sabha MP Manoj Jha and party leader Fayaz Ahmed filing a petition on behalf of the party. The duo will approach the Apex Court tomorrow, Monday, to contest the bill's provisions, which they argue could have significant implications for the management of Waqf properties. The Waqf Amendment Bill has sparked controversy across political circles, with several opposition parties opposing it. RJD MP Manoj Jha says the first batch of petitions from Rashtriya Janata Dal will be uploaded tomorrow, and after that, many of our affiliated organizations are going to do the same. प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। Time for a short break. ছোট বাচ্চা খানকে শিখাবি খানা নাখা আগতে আৰু খা পিছে দে সদায় হাতটো চাপা পানী আৰু চাবোন পৰা দলাবি। বাচ্চা খানতে আইৰণ আৰু ভিটামিন এ ডেফিচিয়েন্সিটো বেছি কমন আছে। ইটো নিমিত্তে বাচ্চা খানকে সদায় য়েলো, ৰেড আৰু গ্ৰীণ কালাৰ লগা ফ্ৰুটছ আৰু চব্জি খান যি হইলে বি খেলাবি। বাচ্চা খানকে শিখাবি খানা আৰু খাসকৰ ব্ৰেকফাষ্টটো কেতিয়াবি নাখাই কিনা নাছাৰিবি। বাচ্চা খানকে শিখাবি আনহেলদি স্নেক্স, chips, fries, namkeen, chocolate aru cold drinks khan chari kina healthy snacks khan whole fruits, dahi aru unsalted nuts khan hi khabi. Itu hodai yad rakhibi bacha khan ke tiffin te healthy khana hi dibi aru tai khan ke tiffin te cereals aru pulses ke milai kina dibi aru ekta fruit na hoile vegetable to ji hoile bi dali dibi. Welcome back after the break. Let's continue with the news.
Texas Democratic Representative Al Green said Wednesday he plans to bring articles of impeachment against President Trump after he suggested the U.S. should take over Gaza. The movement to impeach the president has begun, Green said on the House floor. On Tuesday, as Trump met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House, he floated the idea of the U.S. taking over the Gaza Strip. He said Americans should be responsible for cleaning up and rebuilding the war-torn region, though he did not provide details about who would be able to live there. These are some of Trump's most extreme comments on the matter and come after the start of the Israel-Hamas ceasefire last month. There are nearly 2 million Palestinians who hope to have their own state. Democrats, including Green, slammed the president for the remarks, calling the takeover idea ethnic cleansing and likened it to a throwing of a match on an already volatile situation. I want President Trump to know that I will use my staff of freedom to proudly bring forth a message that should say to him, he may not finish this term. He may not finish this term. He may not finish this term. He may not finish. He may not finish this term. Here's why. Here's why. Here's why. Here's why. Here's why. Here's why. Because you are now sowing the seeds that can lead to a Congress being elected that will have the courage to not only have articles of impeachment filed, but to impeach him a third time. Impeach him a third time. A third time. My friends, for every Goliath, there is a David. There's a David. These are your Davids. There's a David. And I want you to know, Mr. President, this David is going to bring articles of impeachment against you within the next 30 days. Within the next 30 days. I'm bringing articles of impeachment. I'm coming for you, Mr. President. This David is coming for you. You don't deserve the office you hold. You can't be entrusted with liberty and justice for all. You can't be entrusted with government of the people, by the people, for the people. With the initiatives of the Ministry of Home Affairs, the first ever meeting between Meitei CSOs and Kuki-Zo representatives in New Delhi ended positively on Saturday, in which the meeting collectively discussed 6 major crucial points to pave the way towards a lasting solution. The meeting decided to welcome any initiative by the government to facilitate the return of IDPs, internally displaced people, to their respective places, subject to logistics and security arrangements made by the government, and also acknowledge the difficulties faced by the public on account of obstruction to free movement of traffic on national and state highways, urging the people to cooperate with the administration to normalize the functioning of highways. The meeting also agreed that all long-term and contentious issues will be taken up with Government of India, MHA, for resolution through dialogue and consultation with the communities, and also appealed to the Governor to prioritize development activities in the areas which were neglected during the conflict. The meeting also appreciated steps taken by the Governor to facilitate the deposit of arms and assured to extend all cooperation in this regard in the future in order to instill a sense of security among the people. They also made an appeal to their respective people to refrain from indulging in violence, targeting members of other community, and urged the administration to take strong action against perpetrators of violence. From MHA, 3 officials headed by A.K. Mishra, including IB Joint Director Rajesh Kamble, took part in the meeting, and the state government was represented by Manipur Chief Secretary P.K. Singh and Additional DGP Ashutosh Sinha. Mention may be made here that altogether 6 delegates, 3 each from AMUCO and FOCS, represented the Meitei CSO, while Kuki-Zo representatives took part in the meeting, 6 from Kuki-Zo Council and 2 from Zomi Council.
COCOMI declined to participate in a recent Ministry of Home Affairs-led meeting in New Delhi, condemning it as a staged event aimed at reinforcing a misleading narrative that the Manipur crisis is merely an ethnic clash between Meitei and Kuki communities. They argue this framing, echoed by Union Home Minister Amit Shah, distorts the deeper reality of a long-standing proxy war backed by the government of India through support for Chin Kuki narco-terrorist groups under the Suspension of Operations Agreement. COCOMI accuses the central government of being an active party to the conflict, not a neutral mediator, and says recent peace gestures are political optics without real intent to address root causes. They demand urgent steps, including the enforcement of law and order across the state, dismantling of militant groups, ending the SOO agreement, unblocking highways, and prosecuting those undermining peace efforts. COCOMI stresses that true peace can only begin once the government dismantles the militant infrastructure and restores a terror-free environment, emphasizing that civil society cannot shoulder this responsibility. They warn that the centre is pursuing a dangerous divide and rule strategy and urge citizens of Manipur and the global community to see through what they call a deceptive agenda. Prime Minister Narendra Modi was facilitated by the BJP leaders as he arrived to address a public meeting in Rameswaram city of Ramanathapura, district of Tamil Nadu, after inaugurating India's vertical sea lift bridge, New Pambam Bridge. Tamil Nadu Governor R.N. Ravi and Railway Minister Ashwani Vaishnav are also present during the felicitation. Prime Minister Modi was given a painting by Union Minister and BJP leader L. Murugan. The Prime Minister also dedicated the Pamban Bridge and multiple national highway projects to the nation and also laid the foundation stone of other road infrastructure projects. Modi, while addressing a public gathering in Tamil Nadu, emphasized the centre's commitment to strengthening the state's infrastructure and welfare. He asserted that Tamil Nadu has witnessed unprecedented development in the past decade, especially in the areas of railways, housing and road connectivity. Highlighting improvements in urban mobility, the Prime Minister said modern public transport like the Chennai Metro is also increasing the ease of travel in Tamil Nadu. Turning to housing, Prime Minister Modi outlined the success of the PM Awas Yojana across India, with over 4 crore Pakka houses delivered to poor families. He also announced the modernization of 77 railway stations across Tamil Nadu, including the holy town of Rameswaram. तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கட்டமைப்பு தான் பாரத அரசின் முதன்மை. கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் ரயில் துறை பட்ஜெட்டிலே 7 மடங்கிற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। इवत्तयெல்லாம் चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है। हमें याद रखना है, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है। मेरे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। நண்பர்களே, சென்னை மெட்ரோ போன்ற நவீன பொதுமக்கள் போக்குவரத்து வசதியும் கூட தமிழ்நாட்டிலே சுலபமான பயணம் மேற்கொள்ளுதலை மேம்படுத்துகிறது. இத்தனை பெரிய அளவில் கட்டமைப்புகள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வரும் வேளையிலே இவற்றின் அனைத்து துறைகளிலும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. என்னுடைய இளைஞர்களுக்கு
வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், மறந்துவிடக் கூடாது. साथियों, बीते दशक में भारत ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश किया है. मुझे खुशी है कि तमिलनाडु के करोड़ों गरीब परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है. बीते 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर देश भर के गरीब परिवारों को मिले हैं और इसमें पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं. நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டிலே बॉडी 14 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे. और आपको पता है उस समय इंडियन अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है. इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है. इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है. 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை ரயில் துறை திட்டங்களுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெறும் 900 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. அப்போதெல்லாம் கூட்டணியிலே யார் ஆட்சியில் அமர்ந்திருந்தார்கள் என்பதை நான் கூற தேவையே இல்லை. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் ரயில் பட்ஜெட் 6000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம். பாரத அரசு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 77 ரயில் நிலையங்களையும் நவீனப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இதிலே ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையமும் இடம் பெற்றிருக்கின்றது. साथियों, लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है. 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4000 किलोमीटर रोड्स बनी है. चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा. நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே கிராமப்புற சாலைகள் That is all we have for now. For more news and the latest updates, keep watching Hornbill TV. Because sometimes news is more than mere information. And we all need a little more clarity under the details.